Now today, let's start with chapter number 3, animals and their feeding habits. We have different animals. We have wild animals, domestic animals, pet animals, and aquatic animals. In this chapter, we'll study about type of animal, food chain, and what are their feeding habits of animal, and we should take care of domestic. Now let's start with the chapter. Identify the picture and write the names in the space. यहाँ पे आपको space दिया, you have to write the names of these. Now all living things need food to live and grow. Plants make their food. Plants अपना खाना अपने आप बनाते हैं. किससे बनाते हैं? By the process of photosynthesis in the presence of air, water and sun. Animals depends directly or indirectly upon plants for this. Animals directly or indirectly किस पे depend होते हैं? Plants. Animals eat plants or other animals. Plants को भी खाते हैं, other animals को भी खाते हैं. Different animals eat different types of. Now this method of eating is also different. Right? We have types of animals. First is herbivores. Herbivores are the animals that eat only plant products. Then we have carnivores, the animals that eat flesh of other animals. And then we have omnivores, that animals that eat both plants and animals. We have scavengers, or dead or decay remains को खाते हैं, dead or decay remains को खाते हैं. वो क्या होता है? Scavengers होते हैं, उन्हें हम environment की cleaner भी कहते हैं. Now herbivores, animals that eat only plant, vegetable, fruits are known as herbivores. And these animals are known as plant-eating animals like cow, horses, rabbit and giraffe. These are the example of herbivores. ये क्या है आपके herbivores? ये खाली plant eaters है, plants खाते हैं, plant products खाते हैं like fruits, vegetables and grains. Then we have carnivores, animals that eat flesh of other animals. They are known as carnivores like tiger, lion, wolf, like tiger, lion, wolf and snake. These are the carnivores. Then we have omnivores that eat both plant as well as flesh of other animals like deer, crow and dog. Human is also an example of. We have scavengers also. These are the animals that depends upon the dead animals and they are known as environmental cleaner like vulture, hyena, crow. What are these? These are scavengers. Now food chain. Living things होते हैं वो depend करती है food पे and this shows through a food chain. Like in a food chain, plant जो होगा वो first level होगा. प्लांट को कौन खा रहा है? मतलब वो प्लांट जो होगा वो क्या होगा? आपका प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? खाने को प्रोड्यूस कर रहा है. और उस प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है प्लांट को. ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है. ठीक है, कंज्यूमर हो गया वो. एंड देन द फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक. व्हाट इज दिस? दिस इज अ फूड. A grasshopper is eating plant and then it is eaten by frog and then eaten by snake. देखो animal जो hunt करते हैं उन्हें हम predator कहते हैं. Then we have feeding habits of animals. We have carnivorous animals. Different animals eat different types of food. Animals have different ways of eating. The way of eating depend upon the shape of mouth. उनके jaws कैसे, teeth कैसे होना है. ठीक है, कार्निवोर जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ एंड फॉक्स, इनके लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं जिन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं. कैनाइन्स व्हाट दे डू? दे टीयर फ्लैश एंड दे च्यू मीट एंड बोन्स विद अ स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. जो स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होंगे वो क्या होंगे? आपके मोलर्स. दे आर नोन एज. देन वी हैव हर्बीवोर्स एनिमल्स दैट ईट ग्रास और प्लांट प्रोडक्ट्स आर नोन एज हर्बी. इनके फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं खाने को चबाने के लिए, तो चू देयर. ठीक है, and their front teeth are sharp but not pointed. देखो उनके front teeth जो होते हैं वो sharp होते हैं, pointed नहीं होते. ठीक है, some of the animals like cow, buffalo, what they do? They first swallow their food completely and then they bring them in their mouth. इस process को क्या कहा जाता है? Chewing of bite. आपने देखा होगा गाय जो होती है, cow जो होती है, तो मुंह चलता रहता है, वो क्या कर रही है? कड़ को chew कर रही है. और इन animals को क्या बोला जाता है? Ruminants. They are known as ruminants. Now we have omnivores that have sharp front teeth. इनके sharp front teeth होते हैं जिससे क्या करते हैं? बाइट करते हैं plants and large canines for tearing. Okay? क्या होता है? sharp तो front teeth होता है जिससे ग्रास को काटते हैं और इनके large canines होते हैं जिससे फ्लैश को टीयर करते हैं. They also have molars and premolars जिससे क्या करते हैं? कट करते हैं और plants को chew करते हैं और फ्लैश को भी chew करते हैं. Then we have animals that grow, जैसे rat, rabbit, squirrel, ये क्या करता है? ग्रो करता है.
इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, लेकिन अपर और लोअर जो दे कट एंड बाइट फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स विद दिस टीथ। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रोइंग द फूड। और जो ग्रो करता है सीड्स एंड फ्रूट्स को, दे आर नोन एज रोडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है, रोड। एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड एज होल, जो निगलते हैं, जैसे स्नेक हो गया आपका, फ्रॉग हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल लिजर्ड। व्हाट आर दीज? दीज आर द एनिमल्स दैट swallow their food without chewing, चबाते नहीं है, सीधा निगल ले। Feeding habits of some other animals, if we talk about cat and dog, आपने देखा होगा ये क्या करते हैं, मिल्क को लिकअप करती है, वाटर को लिकअप करके, किससे, अपने टंग से। The size of the animals does not determine what it's, देखो साइज ये डिटरमाइन नहीं करता कि वो क्या खाए। Now like insect, what insect हो गए, जैसे आपका बटरफ्लाई हो गया, what they do, they suck nectar from the flower। बटरफ्लाई क्या करती है, नक सक करती है नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। इंस्टेड ऑफ टीथ दे हैव लॉन्ग हॉलो ट्यूब इन देयर माउथ। देखो इनके टीथ नहीं होते, इनके लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है इनके माउथ में, जिससे क्या करती है, नेक्टर को सक करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ का यूज करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं। हैज अ मॉस्किटो एवर बिटन यू? अ मॉस्किटो डज नॉट रियली बाइट, इट हैज अ शार्प हॉलो ट्यूब इन द माउथ। वो स्टैप करती है और वो क्या करती है, आपके ब्लड को सक कर ले। नाउ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, वी शुड केयर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स। All animals need care and protection. We have certain animal at home as pet or do some work जो हमारे लिए कुछ खाते, को भाई काऊ कोई पाल रहा है तो आपको मिल्क देते, तो ये क्या है, डोमेस्टिक है, उनकी केयर करनी चाहिए, उन्हें प्लीज नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल नीड मोर केयर बिकॉज दे सर्व अस, दे मस्ट बी फेड प्रॉपर्ली, they need right amount of food, in a right amount of food देना चाहिए, right time to stay healthy. They also need enough water to drink, they need place to stay and sleep, and we must make proper shelter for them। और इनके लिए हमें क्या बनाना चाहिए, proper shelter। Domestic animals should be washed or given regular baths, the dung or droppings should be removed from their shelter। देखो dung करती है वो, तो उसको आपको properly रोज की रोज उसको रिमूव करना, उनको अच्छे से क्या करना है, वॉश करवाना है। एंड इवन अ वेल केयर्ड फॉर डोमेस्टिक एनिमल मे फॉल सिक, अगर आप उसकी वेल केयर करोगे तो, वेल केयर नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बीमार। वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट टू अ साइड और इंजरी और इलनेस। सिक एनिमल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एट होम, दे शुड बी टेकन टू अ एनिमल डॉक्टर। एंड हु इज द एनिमल डॉक्टर? दैट इज veterinarian। Some animals are kept as pet, we love them for fun, we play with them, they become the part of our home or our family। All the animals are friends and we should be kind to them। और हमें कैसा रहना है, kind रहना, right? Now our chapter has been completed, hope you understood the chapter। That's all for today। Thank you।